ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ अस्माकम् अद्यतनविषयः अस्ति ल्यप् प्रत्यय। 1 minute, I'm sharing screen. अभ्यास 138 पृष्ठक्रमाङ्क 76. But along with lep pratyaya, we are going to see two other important pratyayas. These are like the pratyayas that keep coming again and again in Vedanta classes, because the words are there. While they have not given specifically, the words are still there, so we can still see. Shtatrimshat 38. Okay. So today is lyap pratyaya, which in itself is an important pratyaya. Very, very common prayoga is done. But also vach, shuch, twach, rich. So vach, vani, shuch, shoka, twach, twacha, rich, vedaki, richa. Ye sab, all these are something called quip pratyaya. Quip pratyaya. K-V-I-P. This quip pratyaya is in Vyakarana, this is called shunya pratyaya, because it doesn't do anything except it will make a dhatu into a sanya shabda. Just simple karya. The dhatu becomes sanya when you add something. So the most common, most well-known example of quip pratyaya is anybody has any guesses? Quip pratyaya that we have seen, very common word. I'll give a hint. That word has two upasargas. Upa, ni, shad. Sad dhatu. Sad dhatu will turn into Upanishad. You see, there is no karya there at all. That shakara has come because of upa and ni. Really, that sad has become sad, and then shad transformed to shad because of the shabda. Dhatu becomes sanya. So this is called shunya pratyaya. Like bhu will become bhava, kru will become karta. Simple shabdas, just dhatu to sanya shabda. That is it. This sutra number for quip pratyaya is, do you still see my screen? You see my screen, huh? 3, 2, 1, 2, 3. 3, 2, 1, 2, 3. No, but I want to know what 3, 2, 1, 2, 3 is. 3, 2, 1, 2, 3. Vartamane illat. This one. 3, 2 is correct. Not 1, 2, 3. 3 to 61. This is Quip Pratyaya Sutra. You see in the beginning itself it says Sat. Sat will become Upanishad. Sat, Su, Dvisha, Druha, Duha, Yuja, Vida, Bhida, Chida, Ji, Ni, Ra, Raj, Jam, Raja, Upasarge, Api, Quip. All these dhatus, they will just become Sanya Shabdas. So in Kashika they have given examples. So Laghu Siddhanta Kaumudi, the sutra is not even there. But it is there in Siddhanta Kaumudi. So you see Upanishad Shabda. Upanishad given by Siddhanta Kaumudi through Sad Dhatu.
And if you want to chant this in class, you can chant this much. Ebhyah kvipsyad upasarge satyati cha satyupapade. This much is good enough for pre-class chanting. Kvip pratyaya. Sadso dvisha droha doha yoja vidabhida chidha jini raja upasarge api kvip. So while they have not given the pratyaya specifically, like Matup also they had not given. Matup came along with Nishtha pratyaya or something, Nich or Nishtha or one of those, Sun maybe. So here Kvip is also not given specifically, but you can take this Kvip pratyaya. This will come, I think the whole Abhyasa different examples are there of Kvip. Moving on. Kokila. हाँ, आभाजी कृपया पठतु ये सब. Vani, that one? No, from Kokila to Shena. Vani we finished, na? Vat, Shuch, Twach, Rich. Over. Okay. Kokilah, Koyal, Mayurah, Mor, Hansah, Hans, Shukah, Tota, Chatakah, Chatak, Chakravakah, Chakva, Khanjanah, Khanjana, Kapotah, Kabutar, Tittibhah. Is anybody saying anything? No, only you. Okay. Others, if anyone is unmuted, please mute. Okay. Tittibhah, Titihari, Chillah, Cheel, Kakah, Kawa, Vayasah, also Kawa, Kukkutah, Murga, Grudrah, Eid, Bakah, Bagula, Ulukah, Ullu, Shenah, Paj. So all these birds, they are all birds. Sorry? They are all male. Correct. Pullinga birds. Birds are all pullinga because akaranta. Kokila, koyal, cuckoo. Mayura, more, peacock. Hansaha, swan. Shukaha, parrot. Chatakaha, this I saw online. It's a Jacobin cuckoo. So, type of cuckoo. This is the Puranic bird, है ना? ऐसा कुछ होता नहीं है शायद. अच्छा, it doesn't exist? I don't know. Okay. I don't know. This is much. हम शास्त्र में ही साहित्य में देखते हैं ये नाम. अच्छा, या आजकल नहीं है चातक. ओके. पौराणिक ये भी है वो क्या है वो गीध. हंस भी है. हाँ. But they exist. Like चातक का I don't know. Actually I don't know कि कभी zoo में कहीं पे ऐसे नाम का कुछ देखा है. अच्छा. तो it online it said Jacobin cuckoo. So type of koyal. This is the one that drinks the moon को पीता है. Is this the one? Moonlight say. I don't know. I have not Okay. this. Maybe we have to check. Good question, Abhaji. If you can check, please let me know also. Chakravaha, Chakwa. Chakwa, Brahmani duck, Indian duck. Khanjanaha, online. You see, some of these words I don't know. I just checked online. It said wagtail. I'm not very good at birds. Wagtail, Khanjana. Kapotaha iti, pigeon, kabutar. Titibihi, titiari. Online iti atra lapwing vartate, lapwing. Chillaha, cheel is kite. Shenaha, hawk. अच्छा सॉरी. काकः वायसः क्रो. कुक्कुटः चिकन. गृध्रः गीध वल्चर जैसे जटायु. बकः हेरॉन लॉन्ग नेक वाला. ग्रीव दीर्घ ग्रीव. उलूकः उल्लू आउल. शेनः हॉक. अपि च इति सर्वे पुल्लिङ्गशब्दानि सन्ति. किन्तु सारिका मैना स्त्रीलिङ्ग. वार्तिका बत्तक बत्ती डक. चटका चिड़िया. चिड़िया क्या स्पैरो. अपि च घ क्रिया विशेषण स्वच्छ. स्वच्छ क्लीन. Lots of words, names of animals came. Bhalu and all came पूर्व कक्षायां.
इह बर्ड्स कोकिलादि व्याकरण वाच हु धातु यप प्रत्यय एंड चतुर्थी विभक्ति। वाच शब्द के पूरे रूप स्मरण करो, हु धातु के दसों लकार के पूरे रूप स्मरण करो। तो प्रथम वाच शब्द 18, हु धातु 36। अष्टादश अष्टादश हाँ अत्र अस्ति वाच। सुमञ्जय जी अस्ति वा? नास्ति चेत् अवंतिका जी कृपया पठतु। वाच चकारांत स्त्रीलिंग वाच शब्द। वाक् वाचो वाचः वाचं वाचो वाचः वाचा वाक्भ्यां वाक्भिः वाचे वाक्भ्यां वाक्भ्यः वाचः वाक्भ्यां वाक्भ्यः वाचः वाचुः वाचां वाची वाचो वाक्। हे वाक् हे वाचो हे वाचः। धन्यवादः। वाग् वाक् वाग् उभयोः सम्यक् स्तः। वाग् वाचो वाचः। we've been seeing, right? बृहदारण्यकोपनिषदि वाग् इति शब्द नास्ति वा? होत्रा, अच्छा, we didn't see. Chakshu we saw. Chakshu, mana and something else we saw. Vag we have not seen, right? वाग् we saw, right? Agni. अच्छा हाँ वाचा। वाग् तो पहले देखा। Correct. Agni 313 I think was that, right? 3.1.3 वाचा तृतीया एकवचनम came. If you remember, all samanadhikarane they came. Hotra, Ritvija, Agnina, Vacha, right? That was 313. Hotra, Ritvija, Agnina, Vacha. Then Advaryu, and then Advaryuna, Ritvija, Adityena, Chakshusha. Api cha Adyatana Asit, Udgitra, ऋत्विजा चंद्र नहीं वायु है ना, प्राणेन वायुवे, वायुना प्राणेन, और मनसा चंद्रेण इन माध्यमिनी. So this vacha, anyway, all that this vacha is 30 today. Sorry, I have a query. So this watch to walk is our chohu kuhu. Yes, but you see, Vach is the Shabda. Vak is the Prathama Vibhakti Ekvachanam version. But why would it change from Cha to Ka? There is one. Choho Kuhu kind of sutras are, when the Dhatu with Pratyaya, that kind of changing. There is one thing here. Like Pach Dhatu will become Paktum, Vach Dhatu Vaktum, in that way. Yeah, correct, that way. But also from Vak to Vag, feels like Jalanjashi. It will depend on what is next, right? What is next, correct. But in that Jalanjashi, we say that Vag ke varg mein 3 ya 4 hona chahiye. But usually it comes as Vang Manasi. Now how does it become Vang? Because of Makara following. That is through. Abhaji, you chanted one sutra today for Bridhandeka. What sutra? The Anunasika one. Which is that? Which is that sutra? Yaronunasiko Anunasiko Va. Yaronunasike. That is the Sutra Sundari. Yaronunasike Anunasiko Va. 8445. 8445. That is the Sutra. So how Vag becomes Vangmayam? That is because of Makara that is following. When Makara follows, that Kakara will become the Anuswara of that Varga. Anuswara of Kavarga is Ngakara.
So Vak plus Mayam will become Vangmaya. Yaronu Nasike nu Nasiko Va. That is the sutra. Okay. I made a history in chanting time. Nobody will forget that I chanted this long thing. No, don't worry. There are people. And then Vag, so you see here, Sundarji, like you had said, Vagbhyam. When you see Vagbhyam, because of the Bhakara following Kar to Ghar, that is Kar to Jala. Ghar. Yeah, that is Vagbhyam, correct. So that all we know. Kharicha, Jalanjashvante, Jalanjashtashi, all of those are sister sutras, sister, brother, whatever, sibling sutras. Yeah, Vagbhyam. Ashicha, sorry. Thanks. Okay. So this is for Vacha. Vacha. Vag to Vaj. There is a sutra. We will come back to that. Anyway, Dhatu. Hu Dhatu 36. Kutra asti? Shatrinshat. Hu Dhatu. Sundar ji कृपया पठतु लट लोट द्वे जुहोति जुहोतः जुह्वति जुहोषि जुहुतः 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 जुहोमि जुहुवः जुहुवः जुहोतु जुहुतां जुह्वतु जुहुदी जुहुदी जुहुतं जुहुत जुह्वानि जुह्वाव जुह्वाव Juhvani, Juha, Jumana. Ekanimisha. So, you know, today at the end of Brihadaranyaka Upanishad, right at the end of the class, last 2 lines, that one page we went really quickly. There was one line, Udite Juhoti, Anudite Juhoti. Correct. This is that Juhoti. Latlakara, Prathama Purusha, Ekavachana. Udite Juhoti, Anudite Juhoti is Mimamsa term. They say when you are doing Argya, that is Sandhya Vandanam, you have to do it when sun rises or before sun rises. Udite, Anudite. I think that is the meaning. I have to go check, but I think it is the meaning. Anyway, Juhoti is Hu Dhatu, Havan Karne ka arth. So, Vacha also came, Hu Dhatu is also coming. So, we are meant to study this way, clearly. Everything is connecting. And we are meant to do that upasana as well. Right. Correct. अस्तु लंग विधिलिंग सुंदर जी भावाने में कृपया पठतु लंग अपि च विधिलिंग अजुहोत अजुहुता अजुहवुहु अजुहोहो अजुहुतं अजुहुत अजुहवं अजुहुवा अजुहुम जुहुयात जुहुयातां जुहुयः जुहुयाः जुहुयुहु जुहुयु जुहुयाः जुहुयातां जुहुयातम जुहुयात जुहुयाम जुहुयाव जुहुयाम सत्य. So in मीमांसा जनरली इस विधिलिंग में ये जुहुयात भी आता है, जुहोती भी आता है, जुहोतु भी कभी कभी आता है, जुहोती और जुहुयात भी अर्थ संग्रह में आना शायद है. अर्थ संग्रह में समवेयर जुहोती एंड जुहुयात आर देयर. अपि च लट्लकारे होष्यति होषित होष्यन्ति होष्यसि होषितः होष्यथ होष्यामि होष्याव होष्यामि. होता has also come. होता of course here is not that होता. वहाँ होता नाउन है ना. Correct. That is the difference. वहाँ पे संज्ञा शब्द है. Here it is धातु. लुट लकारे प्रथम पुरुष एकवचन होता. होता there it will be like कर्ता शब्द. कर्ता करता रहो करता रहा. वैसे होता होता रहो होता रहा. And then that full thing will go. All after vibhaktis. Everything will. होयात होया सम होया सो आशीर्लिंग. अहोष्यत अहोष्यताम अहोष्यन लिंग लकार. लिट लकारे परोक्ष भूतकाल. So when we say that person did,
उसने किया, उन्होंने किया बहुत साल पहले, पता नहीं कब, राम ने रावण के साथ. सो व्हेन वी से राम और रावण का युद्ध, so that time we don't see that it happened, right? We don't really know that Ram Ravan Yudh happened. Paraksha Bhutakal mein, I was not there. We know it happened, but I was not there to see. That is, I didn't directly see. So that all will be sometimes in this Puranika literature. There will be lit laka. Even Brihadaranyaka also, after Brahmakandika, after Mahavakya. Also all the dialogues. Correct. Also the dialogues. Yajnavalkya went, all this, correct. Uchire, all those things will come. Lit lakara. Juhava juhuvatuhu juhuvu. Juhuvitha juhuvatuhu juhuva. Juhava juhuviha juhuvima. Juhava or juhuva, juhavitha or juhotha. Lit lakare itiyapi atrapi nasi itivat api. Itivat api prayoga asi. Juhan chakara. Juham bhabhuva. All of this is allowed in lit lakara. Chakara, bhabhuva, in this way. And lung lakara, ahaushit, ahaushtam, ahaushuhu, ahaushihi, ahaushtam, ahaushta, ahausham, ahaushya, ahaushma. Just for me to remember, like we said, prerna, artha, and bhutkala, etc. How will I define the lip? How will you define lit? Lit. The lit pratyaya that we are talking about. Lyap pratyaya. Lyap pratyaya, how would I define that? Lyap pratyaya. Is there something they have said in Hindi? Not even. But when you see the examples, it will become easy. So one thing that I understand is, if there is already an avyaya, like in Upanishad, Upa is already there. So in this situation, Lyap pratyaya comes. Not necessary. No. See, Upanishad there is quick pratyaya. यहाँ पर 136 में धातु से ऊपर अव्यय उपसर्ग या. Correct. तो yes. So Upa, first of all, in Upanishad, Upa is upasarga, not avyaya. Right? That is the first thing. Second thing, Upanishad you can say here, it is there. But here, when we first spoke about this Upanishad Shabda, that was not Lyap pratyaya, that was Quip pratyaya. Now Lyap pratyaya is coming. There is a difference. Right? We will come to Lyap further. Yes. We'll see the examples. Now when we see this will become clear. But Abhaji, you are correct in the sense that dhatu se purva avyaya or upasarga. There upa is upasarga, not avyaya. But we will come. All this will become clear now in examples. Tritiya, अभ्यास दशम में दिए चतुर्थी के नियमों का पुनः अध्ययन करो. So this also we'll do quickly, because we did for द्वितीया and तृतीया and all. अभ्यास दशम इति सर्वे वयं करिष्यामः स्म, कुर्मः स्म. So now अभ्यास दशम किन्तु प्रथमः नियम 63. सर्वनाम शब्दों और विशेषण शब्दों का वही लिंग विभक्ति और वचन होता है जो विशेषिका होता है. सो दिस नाउ फॉर अस इति सर्वे बहु सरलम अस्ति. कहा नरः, ऑफ कोर्स विल से कहा नरः, नॉट के नरः और कौ नरः और समथिंग. कहा नरः. कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदानम. दान आदि क्रिया जिसके लिए है उसे संप्रदान कहते हैं. सो हियर देयर इज नथिंग, नो सूत्र एंड ऑल. उसको संप्रदान कहते हैं. मे बी देयर इज अ सूत्र नंबर. दिस इज पोटेंशियली अ सूत्र. कर्मणा यह संप्रदानम. दिस इज 1432, बट इट इज नॉट सेइंग मच. चतुर्थी संप्रदाने, संप्रदान कारक में चतुर्थी होता है. सो विप्राय दानम ददाति. व्हेन यू गिव टू समबडी, दान करके वक्त वो दान करके समय वो चतुर्थी विभक्ति प्रयोग होता है. अपि च ये बहु मुख्य सूत्र अस्ति. नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषड योगाच्च. दिस सूत्र सेइंग नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम, in all this vashad, in all these shabdas chaturthi will come. That is why saying gurave namaha or Shri Gurubhyo namaha. Gurubhyo bahuvachanam, gurave ekavachanam.
शिष्याय स्वस्ति, अग्नये स्वाहा, वायवे स्वाहा, सूर्याय इदन्नमः, ओम भूर्भुवस्वः स्वाहा, प्रजापतये इदन्नमः, भू स्वाहा. All this we say, right, in yaga etc. Agneye, vayave etc. Pitrubhyah swada, indraya vasha. So all these you will use chaturthi vibhakti. नमः स्वस्ति स्वाहा स्वदा वलम वशट योगाच. एक प्रश्न है, how did we reach to whichever page we are on? How can we reach to whichever page? This is number 20 page number. अच्छा. And why did we go there? I think I missed Because they said चतुर्थी विभक्ति के नियम पुनः स्मरण करो. Okay. ये चतुर्थी विभक्ति के नियम ये सभी. जो हम शिवाय वगैरह कहते हैं, हाँ, नमः शिवाय. सत्यम. एग्जैक्टली. क्यों कहते हैं नमः शिवाय? शिवाय कस्मिन् विभक्ति अस्ति? शिव को नमस्कार है, राइट? हाँ, सत्यम, किंतु कस्मिन् विभक्ति अस्ति शिवाय? द्वितीय विभक्ति नहीं होगा शिव को? शिवः शिवौ शिवाः, शिवं शिवौ शिवान्, शिवेण शिवाभ्याम शिवैः. अग्रे शिवाय. ओके, सो दैट इज चतुर्थी विभक्ति. शिव के लिए प्रणाम है या शिव को प्रणाम? शिव के लिए प्रणाम विल बी लिटरल ट्रांसलेशन, किंतु जब नमः बोलते हैं तो चतुर्थी विभक्ति यूज करना पड़ेगा, वैसे है. तो वही बता रहे हैं, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा वलम वशट योगाच. दैट इज सूत्र नंबर 2316. दिस इज एन इंपॉर्टेंट सूत्र because I think in Artha Sangra this must have come, right, 2-3 times. Abhaji, you just studied Artha Sangra. In that I think it is there 2-3 times when we say namaha etc. namaha chaturthi vibhakti के साथ ही करना है. नमः का प्रयोग वैसे ही होगा. शिवाय नमः, रामाय नमः, गुरुभ्यो नमः. गुरुभ्यो कस्मिन् विभक्ति वचनम? चतुर्थी. हाँ, वचनम एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम. बहु. सत्यम. बहुवचन यूज करते हैं. सत्यम बहुवचनम, आदरार्थे बहुवचनम. गुरुभ्यो, गुरवे, गुरुभ्याम, गुरुभ्यः, वैसे होता है ना चतुर्थी विभक्ति में. गुरु शब्द गुरुः गुरु गुरवः, गुरुम गुरु गुरुम, गुरुना गुरुभ्याम गुरुभिः, गुरवे गुरुभ्याम गुरुभ्यः. दैट गुरुभ्यः बिकेम गुरुभ्यो. तो श्री गुरुभ्यो नमः. चतुर्थी विभक्ति. नमः जब आएगा तो चतुर्थी ही आएगा, ऑलवेज आएगी. चतुर्थी विभक्ति विल कम. ओके, बैक टू ल्यप प्रत्यय. तो ये भी किया हमने अभी. वी हैव आल्सो डन दिस नाउ. वाच शब्द हु धातु अभ्यास दशम में दिए चतुर्थी को नियमों का पुनः अध्ययन करो. ऑल थ्री वी हैव डन. Now we come to ल्यप प्रत्यय. समासे नए पूर्वे क्त्वो ल्यप इति विधायक सूत्र अस्ति. मुख्य सूत्र 7137. 7-1-37 को क्या बोलते हैं? 37. हाँ, 37. 7-1-37. समासे नए पूर्वे क्त्वो ल्यप. धातु से पूर्व अव्यय उपसर्ग या च्वी प्रत्यय वी विल कम. आफ्टर सीइंग ल्यप प्रत्यय विल कम बैक टू दिस च्वी प्रत्यय. च्वी प्रत्यय हो तो त्वा के स्थान पर ल्यप हो जाता है. तो त्वा प्रत्यय अभी देखा हमने. वी जस्ट सॉ व्हाट वाज द विधायक सूत्र? मारुति वाकोटी. समान कर्तृकयोः पूर्वकाले. बहु सम्यक, बहु उत्तमम. समानकर्तृकयोः पूर्वकाले बहु सम्यक् अस्ति. करेक्ट. त्वा प्रत्यय एक कर्ता, समानकर्ता एक ही कर्ता है, किंतु द्वे कार्ये. समानकर्तृकयोः पूर्वकाले, बिफोर ही इज डन वन कर्ता, पूर्वकाले एक कार्यं करोति, अपि च पुनः एकमपि कार्यं करोति. पश्यन् प्रतिपेदे, सृष्ट्वा प्राविशत्, खादित्वा आगच्छति, हैविंग ईटन ही गोस, खाकर जाता है. वैसे त्वा प्रत्यय. अत्र ल्यप प्रत्यय. सो ल्यप प्रत्यय में वैसे त्वा के स्थान पर ल्यप हो जाता है. कब?
जब धातु से पूर्व अव्यय उपसर्ग या च्वी प्रत्यय हो तो. So this is like a addition to त्वा प्रत्यय. अगर if there is अव्यय उपसर्ग और च्वी प्रत्यय, त्वा will become lyap. हाँ, किमस्ति प्रश्न? So, हाँ जी. तो the situation is same. This person, same person has done something in the past. Now he is doing something else. उसी भाव के लिए अगर आपका शब्द अव्यय या उपसर्ग के साथ बना हुआ है, then instead of क्विप नहीं, खुदा. क्विप नहीं, त्वा की जगह आप ल्यप का प्रयोग करेंगे. सत्यम. अव्यय या उपसर्ग या च्वी प्रत्यय अभी. च्वी प्रत्यय क्या है अभी हम देखेंगे. किंतु करेक्ट, व्हाट यू सेड इज करेक्ट. अगर त्वा प्रत्यय कर रहे हैं हम, किंतु अव्यय है या उपसर्ग है, तो फिर क्या करना है? ल्यप प्रत्यय करना है, त्वा प्रत्यय नहीं. धातु से पहले नई हो तो नहीं. नई मतलब न, ऑपोजिट, अ. जैसे इफ somebody is not doing something, नए पूर्व, नए समास we say, right? In our classes you may have heard नए समास. नए समास means that avidyamana. This is an example of नए समास. avidyamana, it is not there. vidyamana means it is there. vidyamana se tattvam. There is vidyamana, everything is available. avidyamana, something is not available. So abhav also would be similar. Abhav, correct. Bhava, abhava, correct. Abhava. In these cases you will not do lyap pratyaya. You cannot say abhavya. ऐसे नहीं होगा. धातु से पहले नए हो तो नहीं, lyap pratyaya नहीं होगा. So condition is there. lyap pratyaya कब आएगा? दो कार्य, मतलब त्वा प्रत्यय जैसे something is happening like त्वा प्रत्यय. Second, किंतु अव्यय उपसर्ग या च्वी प्रत्यय है, second condition. Third condition, न अगर है तो नहीं होगा. 3 conditions आते हैं. ल्यप का यह शेष है. हाँ. हाँ. ये जो अ लग रहा है धातु में अभाव, is it one of these अव्यय उपसर्ग या अभाव is न, नए समा, न, नकार is there. नए समा यहाँ पे दिया है ना, नए समा. So this नए. Alright. So it is not this. It is not an उपसर्ग, right? नहीं. No, not उपसर्ग. नए means नए, they have given, right? धातु से पहले नए is a. It is not उपसर्ग. It is just का शब्द, that is all. ल्यप का यह शेष रहता है. ल्यप अव्यय होता है, अतः इसके रूप नहीं चलते. ल्यप प्रत्यय रूप विल बी अव्यय, और अव्यय के रूप नहीं चलेगा. प्रथमा विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, बहुवचनम इति सर्वे नास्ति. नथिंग इज देयर लाइक दिस. जैसे एग्जांपल, प्रलिख्य, लिख धातु. लिख धातु विथ त्वा प्रत्यय किं भवति? भविष्यति लिख धातु लिखित्वा. लिखित्वा, किंतु प्र उपसर्ग है अत्र, तो इट विल नॉट बी प्रलिखित्वा. नो, इट विल बी प्रलिख्य. दिस इज द डिफरेंस. व्हेन we saw this exception in pra shabda, right? हाँ. If there pra is उपसर्ग, right? One of the उपसर्गस is pra. यदि प्र अस्ति तर्हि त्वा प्रत्यय नास्ति. उपसर्ग अस्ति तो त्वा प्रत्यय नास्ति. We can do. What does it mean? Sorry? What does pralikhya mean? What mean? Pralikhya. What does it mean? Pralikhya will be like how can you say, with pra upasarga it will be like क्या, like something अच्छा लिखा है ऐसा. हाँ वैसे होगा. प्रलिख्य, like how you say prabhavati, prasada, in that way we say, right? Like prasiddha. हाँ. Okay. To put some emphasis, like pralikhya, you can say, because pra upasarga will have sometimes different meanings, but pralikhya will be like with emphasis you can take. Along with that, clearly writing, वैसे भी बोल सकते हैं. Clear writing, जैसे हम exclamation mark, if I want to say, I can say, oh, exclamation mark pralikhya, etc. Okay. Pralikhya.
प्रगम्य, स्वीकृत्य, स्वीकृत्य, फॉर एग्जाम्पल स्वीकृत्य, स्वीकार करने का अर्थ में, राइट, स्वीकृत्य। परंतु अकृत्वा अगत्वा ल्यप प्रत्यय का वही अर्थ है जो त्वा का है, अर्थात करके। अगत्वा अकृत्वा इतिवत, if you want to say, that will be the same as twa pratyaya. This is why they said, why they have not given akritya. Any guesses? Because that is there. Correct. That is all. Nay is there. Because of nay, it will not become lyap pratyaya. It will only be twa pratyaya. Akritva agatva. But it is pragamya, svikritya, because of upasarga or chvi pratyaya. Now we will come to chvi pratyaya, right? Avyaya, upasarga. So in Svikritya, Svi is your upasarga. हाँ, Svi is upasarga, but Svi here is chvi pratyaya. So that is what we are going to come to. Swa is upasarga, actually speaking. Swa, right? Swa will be, or you can say avyaya, self, svikritya. Kintu it will not be swakritya, it will become svikritya. Now the question is why, right? So now we come to the third avyaya, third pratyaya of the day. I have a question. हाँ. जैसे हम प्रत्यय का कार्य देखते हैं तो it is always we take a धातु and then to that we add the जो भी प्रत्यय का शब्द है. एग्जाम्पल ल्यप है तो हम उसमें य जोड़ते हैं. तो ना यहाँ पे स्वीकृत्य जो है उसमें कृ इज अवर धातु, राइट? करेक्ट. तो कृ के साथ हमने य जोड़ा. करेक्ट. कृत्य, it became कृत्य, which I don't understand, but I'll park that for now. But इसमें स्वी है, ये हमें अभी कहाँ से पता है? So how did you decide कि कृ को हमें य लगाना है? नहीं, कृ को य लगाना है, ये प्रत्यय का कार्य है. हाँ. कृत. लेकिन we didn't know the स्वी part, right? If we only had कृ, which is what our usual focus is. हाँ. तो अगर मुझे कृ में how would I know कि मुझे यहाँ ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करना है? क्योंकि कुछ तो आगे, इसके पहले कुछ पूर्व है ना, अव्यय या उपसर्ग या च्वी प्रत्यय. सी, कृ धातु में इफ यू वांट टू से हैविंग फिनिश्ड दिस, ये करके मैं गया, वैसे बोलना है. ये करके मैं गया, वैसे कैसे बोलेंगे आप? तो कृत्वा तो हम कह सकते हैं ना? कृत्वा, ये त्वा प्रत्यय है. हाँ. किंतु यहाँ पे स्वी है ना. स्वी अगर है तो अव्यय रूप में, स्वी अगर है अव्यय स्वी प्रत्यय रूप में, तो ये स्वी अगर है तो त्वा प्रत्यय नहीं होगा. You have to say something like, let's say something like I accepted and went. That is where that मैंने स्वीकार किया और गया. तो पर संस्कृत के वर्ड स्वीकृत नहीं है ना, मतलब आई डोंट गेट कि मैं इसमें ल्यप प्रत्यय क्यों लगाऊंगी? मुझे मेरे पास तो धातु कृ होगा. करेक्ट. तो व्हाट डू मीन कि मुझे ल्यप प्रत्यय यूज करना है? पर आई हैव सीन दिस ना, स्वी तो मैंने देखा नहीं. I would look at it कि we will see the word in Bhashya and we have to know what to do with it. हाँ, that is take correct. the dhatu and apply to it. हाँ, 1 second Sundar ji. So your point is correct, but to answer Abaji's question on व्याकरण, right? So Abaji, your question is कृ धातु में ल्यप प्रत्यय क्यों लगाना है? ये है क्या सवाल? Yes. हाँ, because मुझे तो स्वी पता नहीं है ना. करेक्ट, बट सी, कुछ करके जाना है, स्वीकार करके जाना है, वैसे बोलना है तो यू कैन नॉट से स्वीकृत्वा. हाँ, yes. राइट, दैट इज व्हाट दे से, राइट? त्वा के स्थान पर ल्यप. जब ये सब है तो स्वीकार करने में स्वी है ना. Okay. So it is as per the meaning of the sentence you would say. हाँ, of course, everything is based on pratyaya is based on meaning, right? You have to, even while identifying in one sentence what happens, which pratyaya is happening here, you have to see the meaning. Because that example we have seen before, right? In Bhashya, if you see, sometimes there is some shabda like bhuyas or something. Even in Bhuyas Shante, in Shvetashvatra Upanishad also there is this word, maybe Ishavasya, some Upanishads will have this. Bhuyas,
और गरीयस ऐसे शब्द होगा. Ending will be the same in boyas and gariyas, but the or for example turiya, this shabda may also come, right? Ending is all very similar, but pratyayas are different. Meaning देख के ही बोलना है. See, in gariyas pratyayas yesun pratyaya, in turiya pratyayas cha pratyaya. In pratyayas, whether it is twa, lyap, nich, whatever pratyaya, you have to see meaning. So स्वीकार करके मैं गया, ये सेंटेंस में अगर आ रहा है, स्वीकार करके मैं गया और स्वीकार करके मैं बताया, वैसे कुछ बोल रहे, वैसे कुछ है सेंटेंस में. तो यू कैन नॉट से स्वीकृत्वा नहीं होगा, क्योंकि स्वी है ना वहाँ पे. ओके, या गॉट इट, थैंक यू. सो ये स्वी कहाँ से है, मतलब स्व. So meaning that Sundarji said is correct. Self, after having accepted, after having done something by self, swa is there. Now this swa became swi. How? That is the question now. Why swi has come? So there is something called chvi pratyaya. Adyatana pratamaha vayam apashyama kvip pratyaya. Punaha vayam apashyama lyap pratyaya. Adhuna वयम पश्यामः च्वी प्रत्यय. च्वी प्रत्यय फेमस प्रत्यय, वेदांत के लिए बहुत फेमस है. ऑल दीज थ्री वेदांत इंपॉर्टेंट प्रत्ययस फॉर वेदांत, दीज थ्री, ऑल थ्री. च्वी प्रत्यय, देयर इज वन सूत्र 5450. अभूत तद्भावे कृ भू अस्ति योगे संपद्य कर्तरि च्वी. दिस इज द विधायक सूत्र फॉर च्वी प्रत्यय. अभूत तद्भावे कृ भू अस्ति योगे संपद्य कर्तरि च्वी. कृ भू अस्ति, this is the important word in च्वी pratyaya. Even, of course, all of them are important, but this is the critical one, second word. कृ भ्वस्ति. How would you split कृ भ्वस्ति योगे? What sandhi, how to do sandhi vichcheda here? Any guesses? हाँ, सत्यम. So this is simple, especially if you see this explanation, it becomes simple. Point is this: kru dhatu, bhu dhatu, as dhatu. If there is a shabda before these dhatus, abhuta purvasya vikarasya, kru dhatu, bhu dhatu, as dhatu, ये तीन शब्द के पहले if there is one shabda, ये तीन धातु के पहले, but they are the same word, like let's say swa shabda. You take swa shabda, right, and you take kri dhatu, so that swa will become swi. Chvi pratyaya says dirgha ikara will come. This is the point of chvi pratyaya. You can see the examples later. But in simple terms, swi will come because of this. You see here, shukli karoti. Shukli tatha karoti. Shukla actually, you see, shuklam gatam. Shuklam gatam only. Ashuklam gatam. Ashuklaha gataha. But you know what? It will not be shuklaha bhavati. It will be shukli bhavati. Ikara has come. Why? Because this bhu dhatu is following. As dhatu, kru dhatu. That is the next dhatu. Before this dhatu, if such shabda comes, then that akara, ukara, whatever, akara shabda, that visarga will become ikara, dirgha. This is... And that's only for these three dhatus. Correct. Only for kru, bhu and as dhatu. Not in every dhatu. Pat dhatu and all, it will not become. Pat, gam. That is why, if you want to use like some other upasarga, you know, swakriya is there. But if you want to say I myself read, then you will just say swapat or swagam. It's not best words, best examples. You can find such examples. I read myself. You can see, right, in Siddhanta Bindu, in the beginning, idam aspadi bhuta. That came. Why aspadi bhuta? You see, bhuta is there, bhutatu. Bhutatu is there, so aspada became aspadi. That is the point. Yeah.
No, I'm just thinking of Swamiji's words today, where he said only if your mind is very calm, you get very bothered about whether it's a Hraswai or a Didvai. He said, no, today, Right. Yes. Kanva Shakha. Yes. Yes. He says only, otherwise, क्या फर्क पड़ता है? हाँ. What difference does it make? So then other unless mind is calm, this tree pratyaya and all we will not pick up. Sukshma buddhi is required. So this tree pratyaya will say dirghai, swikritya. This is the point here. Not swikritya, not swakritya, swikritya. Swi because of tree pratyaya. So you see three pratyayas we have seen today. आकाश जी, बोलिए. कृत्य क्यों हुआ? कृत्य, हाँ ये आएंगे हम. हाँ यहाँ पे एक सूत्र है, ये नीचे है, नीचे दिए है सूत्र. Kru will become kritva, right? See that dhatu, that is how it declines. त्वा प्रत्यय अगर कृ में लगाना है तो कैसे क्या होगा? कृत्वा. दिस इज दैट धातु हियर. जैसे सेठ धातु में ई लगेगा, अनिट में नहीं. दिस इज द रूल. यस्टरडे वी हैड सीन, राइट, इन 37. धातु को गुण या वृद्धि नहीं होती, किंतु सेठ धातु अगर है तो ई लगेगा, अनिट में नहीं. सो दिस कृ धातु इज नॉट सेठ, राइट? या तो पठित्वा जैसा नहीं हुआ, कृत्वा हुआ. करेक्ट. करित्वा नहीं होगा, कृत्वा होगा. करोमि इज द रूप, राइट? व्हाट इज कृ धातु प्रथम पुरुष रूप? करोमि. सो रकार इज देयर, बट गिवन दैट कृ धातु इज अनिट, नॉट सेठ. अगर सेठ होता तो ये करित्वा होता था. ये सेठ करित्वा नहीं है, कृत्वा है ना. डुक्रिंग करनी इस तनादि सकर्म का अनिट धातु है. सो हियर द ईकार विल नॉट कम, स्वर विल नॉट कम, इट विल जस्ट बिकम कृत्वा. जैसे स्थित्वा, स्था धातु विल बिकम स्थित्वा, दैट इज ऑफ कोर्स. दृष्ट्वा इज द गुड एग्जांपल. दृष्ट धातु विल नॉट बिकम दर्शित्वा. दृष्ट्वा ना, दृष्ट्वेवं स्वजनम कृष्ण, Arjuna says in first chapter, दृष्ट्वा, not darshitva. So that set and anit is there, and kru is anit. So ikara will not come. So it will become krit. Is that okay? No, Not okay. Not. Wow. Yeah. क्रू पे हम य लगा रहे हैं, कृत पे क्यों? क्योंकि करोती है ना. कृ, अच्छा ठीक है. कृ में यप लगाया तो, कृ में य लगाया तो क्या होगा? क्रिया वैसे होगा ना. दैट विल बिकम ए डिफरेंट गण, राइट? दैट इज लाइक क्रियादि गण. क्रीणाति शब्द धातु, क्रियादि गण इज देयर, बट कृ धातु इज नॉट इन क्रियादि गण. दैट takara you are saying where it is coming from, right? In Yes. kritva, that takara, why takara should come, you are saying. So we can see Because this. that takara I understood in the first त्वा प्रत्यय में वो समझ में आया. हाँ. क्योंकि उसमें वो त्वा ही लगना है और अनिट है तो इकार नहीं आया. So there it is कृत्वा. But यहाँ पर There is letter from where we will do the work is from kru, right? यहाँ पे एक सूत्र है. Okay. भ्वादयो धातवः, एक सूत्र है. भूवादयो धातवः. I have heard Avantika ji chant this in class. भूवादयो धातवः. First, this dhatu, bhuvadi dhatus, they are all called dhatus. So this is some basic sutra, of course. You cannot say this is what is making takara. But this sutra says, when this kru dhatu comes, you will get these takaranta rupas. What we are basically doing is, for example, let's take some other example to make. Has dhatu you take, okay? हस धातु इज देयर. हसित्वा में त कहाँ से आया? वो तो हमने त्वा प्रत्यय यूज किया तो वैसे ही कर दीजिए. हाँ, तो वैसे ही कर दीजिए. कृ में ऋकार कहाँ से आया? धातु से. भुआदेयो धातवः. तकार कहाँ से आया? त्वा प्रत्यय से. त्वा प्रत्यय से आया. यस. So rikara has come from somewhere. Bhuvadeyo dhatavaha. That is the sutra for rikara. Ka has become
kr. Of course, it is kr dhatu. Further, that takara, where it is come from? From pratyaya, tva pratyaya. Lyap pratyaya is similar to tva pratyaya. So you will take kritya. Okay. Not clear. याद रखना पड़ेगा ये, बिकॉज केवल ल्यप होता है तो यह ही लगता है ना. तो पहले हमने उसका त्वा प्रत्यय से जो हुआ है उसका रूप लिया है एंड देन उस पे य लगाया है. I think I have to remember this, that's all. No, there is the logic is this. See, logic is lyap pratyay जो है ये त्वो is there here in the sutra itself. समासे नयपूर्वे त्वो ल्यो. lyap pratyay is dependent on त्वा प्रत्यय. त्वा प्रत्यय में जब अव्यय उपसर्ग आता है या च्वी प्रत्यय आता है, then lyap pratyay comes, right? So this kritva is coming, kritya is coming from kritva first. त्वा प्रत्यय पहले हो गया कृत्वा, right? But in that kritva, so takara is already there. Why you have to take only kr? That kritva tva has become lyap. We have dropped the va and we have added the ya. We brought the va and added the ya. But here, you have brought the va and added the ya, satyam. So tva pratyaya se, that is, tva pratyaya will not work like that. But there is one more sutra here. Okay, we come to this. So I missed two sutras, right? This is going to be answered in this sutra. So your question, why that takara came, right? This is in this sutra. Rastvasya kriti prati tuk. There is something called tukagama. This is the simple answer I should have given. I got confused with that question. Okay. So your question is that कृत्वा में तकार कहाँ से आया और कृत्य में कृत्य क्यों आया, क्रिया नहीं हुआ. ये सही है क्वेश्चन? Yes. Okay, so that is because of this sutra, Rasvasya Kritipati Tuk. We will come to this. I got confused with Tva Pratyaya and I started talking about this, but this is the answer. Anyway, we'll see this quickly. जितना होगा 137 ल्यप प्रत्यय लगाकर रूप बनाने के, हाँ कॉपी प्रश्न से ना अगर हम इसको ये ल्य और त्वा का जो भी प्रोसीजर है वो अष्टाध्यायी, हाँ बिल्कुल है, होगा ना? हाँ बिल्कुल है, क्यों नहीं है. ये देखिए धातु पाठ कृ धातु, यहाँ पे अगर हम कृ धातु बोलेंगे, प्रोसीजर नहीं है अष्टाध्यायी में, मैं देखा था. अच्छा, प्रोसीजर नहीं दी है, उनको प्रोसीजर चाहिए. हाँ प्रोसीजर नीचे है, सो वी विल सी द प्रोसीजर नाउ, बट एनीवे वी कैन चेक. कृ में कृदंत में जाना है ना, कृदंते, यहाँ पे ल्यप प्रत्यय प्रकृत्य. So here they have not given. They have given here. You see this sutra, Abhaji, this is the sutra. Ji. Dukri. Kriti Tuk. Tuk means tuk agama. Tuk agama will become ta. जैसे muk agama became ma. Ane muk we saw earlier, that became ma. जैसे tuk agama will become ta. But we cannot come to this first. First we have to go from bhuvadeyo dhatavaha. So I said this dhatu, right? Bhuvadeyo dhatavaha. That became, that dukre will become kr through bhuvadeyo dhatavaha. Then there you are adding a upasarga, pra upasarga. That is through this sutra, upasargaha kriya yogi. So pra plus kr, kriya yoga kar rahe. Then you are adding tva pratyaya, samana kartikeyo purva kale. But in that tva pratyaya you are already doing samase naipurvik tvo lyap pratyaya. Then you are going to do Rasvasya Kriti Pratituk, Piti Kritituk, which makes takar. Yeah. Okay. Sorry, I think I should have started with Rasvasya Piti Kritituk instead I went somewhere else. यप प्रत्यय लगाकर रूप बनाने के लिए ये नियम स्मरण कर लें. क्या नियम है? साधारणतया धातु अपने मूल रूप में नहीं रहती, मूल रूप में रहती है. गुण या वृद्धि नहीं होती है साधारणतया, नॉर्मली. ई भी बीच में नहीं लगता. जैसे ये ल्यप प्रत्यय का साधारण रूप, गुण वृद्धि
सेट ऑन इट, ये सब नहीं आएगा, ई नहीं आएगा बीच में. सो यू जस्ट से आलिख्य. आलिख्य लिख धातु. व्हाट उपसर्ग? इज देयर उपसर्ग फर्स्ट ऑफ? is added. हाँ आ नेगेट कर रहा है. नहीं ना, होता है नेगेट. होगा तो अकृत्य होगा ना, अकृत्वा. यहाँ पे आ लिखिए. नहीं है, so this is not negating, so therefore this can be avyaya or upasarga, one of the two. Okay, so if it is upasarga, there are 18 options. Do you see this a in the screen? No. No? No, I don't see. अरे घंटा हो गया ना यार. आ कहाँ से आया? ये देखो, आंग. Okay. आंग प्लस कृ धातु और लिख यहाँ पे था ना, लिख धातु. व्याकरण चर्चा करके वक्त थोड़ा वैसे हो जाता है. There was some other work going on. No problem, it's okay. आंग, okay, you see आंग प्लस लिख, ऐसे बोलता हूँ, ठीक है. आंग प्लस लिख. डिस्प्ले रिजल्ट बोल के आई गो टू ल्यप. यू सी आलिख्य. This is what is given in Rachananuvadana. Alikhya. So here there is ang upasarga puryak. So when a is coming, you take ang. Even agachati, I think you can say, technically speaking. The screen that we saw, Rachana, uska Ashtadhyayi ka, there in the bracket it said avyaya. Where? वो यप के पहले उसी शब्द पे आलिख्य शब्द पर ही. यप के लप का अव्ययम, तुमुन का अव्ययम, नमुल का अव्ययम, एवरीथिंग अव्ययम. Avyaya means avyaya will work here. Work here, हाँ. This is upasarga. No. Avyaya. Avyaya is definitely ang upasarga. Yes. लिख्य में add करके. Yes. लिख में add करके. Okay. Yes. For example, if you go to sadhatu, right? We'll do some small. Actually, this is not the time, but it's okay. We'll do it anyway. Sadhatu. Visharanagati avasavana. हाँ, this is the sadhatu for Upanishad. Visharanagati avasavaneshu. If I go upasarga, final, then ni upasarga, and I say, show me the, you see, Upanishadan, Upanishadak, Upanishatra. If you add these upasarga also, these shabdas will come here. So you can do experiment on Ashtadhyayi. Okay, anyway, जैसे आलिख्य संपट्य आनी है, संपट्य में क्या उपसर्ग है? आनीय में आंग. सत्यम. सो आंग उपसर्ग है इसका. धातु के अंत में आ ई उ हो तो वह उसी रूप में रहता है. जैसे प्रदाय, आ ई उ धातु के अंत में. सो इन प्रदाय व्हाट इज द धातु? According to what we have read, दा चाहिए. हाँ, दा में अंत में ये है ना, आ. दा में आ आया. उस बेसिस पे गेस किया. प्र इज द उपसर्ग. हाँ, तो ये इज धातु. हाँ, तो you will not make something, nothing else will happen, just ya will come, yakara will come. Pradaya, उत्थाय शब्द में क्या धातु है? था. नहीं, try हाँ, सत्यम. हाँ, स्था धातु. था in all the classes these days. हाँ, correct. So स्था धातु में क्या उपसर्ग है यहाँ पे? Which उपसर्ग है here? उत उपसर्ग. So ut plus tha should become utstha, right? सकार कहाँ गया? सूत्र लगाओ. हाँ, क्या सही? कौन सा सूत्र? सूत्र कहाँ? हाँ, सूत्र है, बिल्कुल है. कौन सी सूत्र? Which सूत्र is here?
सुंदर जी, कल कल परसों आपने बताया था ये स्था का, बताइए। नहीं, मैंने नहीं बताया कि ग्रोथ हुआ। Stha, there is an important But sutra. we discussed it. We discussed this, I remember in class. I don't remember. Why this sutra is important also we'll see. Anandagiri Maharaj, everywhere he say Utthapya, Utthaya. Uttha Shabda comes a lot. This is Udaha Sthastamboho Purvasya. Sutra number Kimasti? Kopi Pashyati va? Kopi Drashtum Shakyati va? Shaknoti va? Udaha Sthastamboho Purvasya. In this search for Stha, S-T-H-A-A, let's say if you search it will come. जिनका अष्टाध्यायी अथवा लघु सिद्धांत नहीं हुआ होगा उनको तो ये कुछ भी समझ में नहीं आएगा, जैसे मेरे जैसे को तो नहीं ठीक होगा। सी एक्चुअली ये सब तो लघु सिद्धांत कौमुदी का कार्य ही है। ये उदाह स्था संभव पूर्व से ये पेज में कहाँ है, ये पृष्ठ में रचनानुवाद कौमुदी में ये नहीं है। उदाह स्था संभव पूर्व से द ओनली सूत्र दे हैव गिवन हियर इज ह्रस्वस्य पीतिकृति तो actually this is all Laghu Siddhanta Kaumudi that we are already seeing. Do you remember in which because Swamiji had asked this in some text. Swamiji asked this in every text because Uttapya will come in every tika. Yeah. Stha came today also. Brihadaranyaka Katha. I might have written the sutra on that text ka page. This See, is I am in Ashtadhyayi. I did a search on Stha. उस स्थ के जो सूत्र हैं उसमें आया तो नहीं आया। नहीं, सूत्र पाठ में देखना पड़ेगा, नॉट धातु पाठ। आया नहीं सूत्र पाठ। So you searched in Hindi or Devanagari or Latin? Devanagari. नहीं, STHA. I got all the stha से starting ones. So you have to go a little below. Udaha will also come, right? नीचे तो कहीं होगा उदाहा। Udaha stha stambho. Okay, otherwise you just do it will be there. So if, just to prove, I will find it. I will also go down. Because I have found it like this. अच्छा, stha से start कर। हाँ, उदाहा से start। हाँ, स्टार लिख के उदाहा से ये आएगा सूत्र। हाँ, last one 8461। करेक्ट। उदाहा स्था स्तंभो पूर्व से ये सूत्र देखिए। उत प्लस स्थानम उत्थानम। So ut plus tha plus lya pratyaya utthapya utthaya, sorry, not utthaya है ना, उत्थाय उत्थानम, all this comes a lot in anything to do with उत्तिष्ठति, हाँ उत्तिष्ठति सेम ना, उत उपसर्ग पूर्वक स्था धातु देयर आल्सो, किंतु वहाँ पे ल्यप प्रत्यय वगैरह नहीं है, दैट इज ओनली तिष्ठति रूप। उत्तिष्ठति के लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन है उत्तिष्ठति। उत्तिष्ठतु विल बी मध्यम पुरुष एकवचन। स्टैंड सॉरी लोट लकार है प्रथम पुरुष एकवचन। स्टैंड अप अर्जुन। उत्तिष्ठतु उत्तिष्ठ यू स्टैंड अप अर्जुन। लोट लकार मध्यम पुरुष एकवचन। Anyway, we have to go now. We have to stop here. Rastasya pidikeditu we will see tomorrow. प्रदाय उत्थाय निदाय निलीय विक्रिय आनीय अनुभूय स्थिरीभूय। एक सवाल है, भूद ये अनुभूय में क्या धातु है? एनी गेसेस? अनु इज उपसर्ग। हाँ, यह जो है क्या प्रत्यय है? हाँ, अब धातु है, अब नहीं भू धातु है, भू धातु इज करेक्ट। ओके, देन स्थिरीभूय में क्या धातु है? It will also be stha. So why Anubhuya and why Sthiribhuya? Why not Sthirabhuya or something? Yeah, because that ikara is there, that we just discussed today. Why you should for the bhu we have this abhut सत्यम बहु सम्यक। हाँ, बहु सम्यक उत्तमम। Which pratyaya but? Asmin pratyaya अस्ति। यह ना, यह
लप प्रत्यय इज दिस ना, समासे नैपूर्वक तो लप अभूत तद्भावे कृभुवस्य योगे संपदे कर्तरि च्विहि। तो च्वी हाँ, च्वी प्रत्यय, च्वी प्रत्यय उसी का तो सूत्र है। करेक्ट। अभूत तद्भावे कृभुवस्य योगे संपदे कर्तरि च्विहि, दिस इज विधायक सूत्र ऑफ च्वी प्रत्यय। So that pratyaya is working here. That pratyaya is working. That sutra, there is another sutra that is doing this karya. So abhuta tadbhave kriya bhuvasya yoge sampade kartari chui, he says chui pratyaya will come when there is kriya dhatu, bhu dhatu, as dhatu. ये दीर्घ कहाँ से आया? Siri. This dirgha, there is a sutra called Chvaucha. I don't know if people remember. हाँ है ना, because we have heard it in many times in classes. Chvaucha sutra is 7.4.26. Chvaucha 7.4.26. Chvaucha. ये च्वौच क्या बोलेगा? च्वी प्रत्यय में दीर्घ आएगा बस. In च्वी प्रत्यय there will be दीर्घ. So stha dhatu will become first thi through that one sutra dhyatisyati mastam ittikiti. That stha will become sti. Stha will become sti. Then ri दीर्घ. Where is ri coming from? From च्वी प्रत्यय च्वौच. च्वी प्रत्यय अभूत तद्भावे कृभुवस्य योगे संपदे कर्तरि. So when we say that why did this re come? Will it be just chau pratyaya or will it be chvi pratyaya, chau pratyaya, chau chau? Chvi pratyaya chvaucha. Chvi pratyaya atra asti. Sthiri bhuya. What is the name of the pratyaya? Chvi pratyaya. Vidhayaka sutra is that abhuta tadbhave kribhavasya yoge sampade kartari chvihi. But karya sutra is there. Why dirgha is coming here? That karya is through chvaucha sutra. So you can say chvi pratyaya and chvaucha. Generally. कल हम यहाँ से देखेंगे ह्रस्वस्य पिति के ति तुक्स. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांतिः शांतिः शांतिः. शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः. ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः. ओम शांतिः शांतिः शांतिः. ओम.